Yes, the recording is started. Thank you. Okay, so let us begin. First of all, thank you for every one of you to give this precious amount of time, because anyhow we'll be conducting for 1 hour. So it is very good that and very appreciable that you have taken 1 hour of important time from your life and for understanding this particular topic and for understanding what exactly this data analytics is particularly going to be there, isn't it? Now, many of you would be, or obviously, we never come with an empty hand. We always do something. We always do some analysis. We always do some research over what exactly this data analytics and this topic is particularly being there. Many of people would be there, and it's very good. It makes me very easy, and it becomes very easy for me to give that information to provide that, isn't it? So based on that, considering that same scenario, this is, as you can see, Arbor Academy. This Arbor Academy is of an IT training institute which also provides placement center. We not only provide data analytics and this particular data analysis and data integration courses, not only that, but there are also other different courses that we also provide. For example, MIM है, AWS है, DevOps है, Java, lots of there. But उसमें से एक है जो है data analytics का है. And for data analytics, I'm the person who is responsible for giving you all the theoretical, practical knowledges. Okay. So I'll be there with you from start to the end of the session with up till the projects also, up to mock interview also. And the for placement part for your resume for preparation and all those will be placed by the placed by our placement team. Okay. Now, Arbor here is, let's say, has came up with a innovative idea, which is, let's say, a foundation process where you will be learning over here data analytic integration tool, which is you're going to work with Power BI, you're going to work with Excel, you're going to work with SQL, and you're going to work with Python. Now, why only these four of the tools, and why we are providing this providing this particular session or particular, let's say, classes over here with reference to this. Now, if you look over the data, or let's say if you look over the information around you, okay, as in perspective of job searching, as in perspective of let's say lucrative jobs which are available in your surrounding or in your environment, you might heard of data analytics, data science, BI. These are all different roles, but ultimately it is referring towards data only. It is referring towards data only. So here Arbor has provided this particular course, this session, where we are only focusing on data analytical integration part, where you are not only going to work in Power BI as on single tool, but you'll also be focusing on Excel, you'll be also focusing on SQL, you'll be also focusing on Python. So in all of in all of this tool, you'll be able to process your data, because whenever a raw data is presented, raw data मतलब क्या होता है?
कहीं तो भी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आपने रजिस्टर में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, एक रजिस्टर है जिसमें आपने कस्टमर्स के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होंगी, हो सकता है आपका बिजनेस शॉप, हो सकता है आपका कुछ उसमें डिटेल्स होंगी जो आपने कलेक्ट कर रखे हैं। बट उस डेटा को, अगर आप उस डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन आउटपुट नहीं निकाल पाए, आप उसमें से कुछ डेटा को रिट्रीव नहीं कर पाए, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो डेटा कुछ काम का नहीं है, वो तो सिर्फ क्या हो गया कि एंट्री एग्जिट के लिए काम है, उसके अलावा कुछ भी उसका काम नहीं रहा। सो इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट हिडन इंफॉर्मेशन, हिडन डिटेल्स, सो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, मैं सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, people who want to seek a good and lucrative job in industry, this is one of a great opportunity. Okay, so Arbor here has presented this particular data analytic and integration part where we are going to work with all these four tools. And who am I to teach you over here? Let me introduce you myself. Okay, here my name is Deepak Bhatlavande. I'm a data scientist. I have worked, have an experience over 10 plus years of experience. So if you will say from 2013, I'm on continuous pursuit with the different knowledges and different roles, different projects. I'm on pursue with that. जहाँ पे डेटा साइंस से देखोगे, डेटा एनालिटिक्स भी देखोगे, बीआई भी देखोगे, तो ऐसे डिफरेंट रोल्स में मैंने उसमें वर्क किया हुआ है। सो फॉर दैट, मैं यहाँ पे जो नॉलेज अभी तक मैंने इकट्ठा किया है, फिर जो नॉलेज अभी तक मुझे मिला है एज एन इंडस्ट्रियल बेसिस में, अब मुझे, मेरा ये काम है कि विद द ह्यूज, नॉट से ह्यूज, बट जो भी नॉलेज अभी तक मुझे मिला है, अभी आपको पास ऑन करना है, न्यू जनरेशन को पास ऑन करना है, या जो लोग इसके लिए जानने के लिए सीख करते हैं, मैंने उसको आगे फॉरवर्ड करना है। सो हियर as a working professional, I'm working with Arbor here for a data analytical data science sessions, or for let's say coaching you, okay, for training purpose. So with reference to me, a small introduction which has been given, let us start with a good quote. Now नील आर्मस्ट्रांग सबको पता है, उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन। आज सही में देखोगे तो आप जो आपने टाइम निकाला है, ओके, आपके लिए कुछ नहीं, आप आज के लिए 1 घंटा दे रहे हो, आज आप जो डिसाइड करोगे, आपको एक दिन पता चलेगा जब आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैकेज होगा, जहाँ पे आपको मिनिमम 7 to 8 पैकेज से लेके 14, 15, 18 ऐसे अच्छे पैकेज मिलने ले आपके हाथ में आएंगे, तो आपको याद आएगा, अरे यार उस दिन मैंने ये जो डिसीजन लिया था कि यस मुझे करना चाहिए ये जॉब, ये फिर मुझे ये सीखना चाहिए था सेशन, नाउ इट इज फ्रूटफुल, तो वो उस समय समझ में आएगा। सो फॉर नाउ इट इज वेरी स्मॉल स्टेप, छोटा सा स्टेप है, बट आप आगे जाके देखोगे तो इट विल बी अ ह्यूज। सेम गोस फॉर यू। नाउ हम क्यों डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्यों डेटा एनालिटिक्स सीखे, क्यों हमें करना चाहिए, क्या सही में बहुत नेसेसिटी है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दूसरा हमें है ना, क्यों नहीं है, या लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आप दूसरी जगह पे जाके फिर दूसरा टॉपिक या फिर दूसरे किसी और सेशन में जाके बैठोगे तो वो भी चीजें आपको उतना ही फ्रूटफुल है, ऐसे कुछ नहीं कि सक्सेस सिर्फ डेटा एनालिटिक्स में ही है। में भी शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा वेट करते हैं ना। ओके, एम ऑडिबल गाइस? यस सर। Yes, sir, you are audible. Yes. ओके, आई थिंक ठीक है। अच्छा, अब बीच में कब कट हुआ था, और इट वाज फ्रॉम स्टार्ट ओनली, आवाज ही नहीं था मेरा। बेसिकली हम लोग ना फोर्थ पेज पे कट हुआ था सर। फोर्थ पेज में। यहाँ पे ओके, यस सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, anyhow I'll continue from there. Okay. नाउ हम क्यों डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्यों इतना डेप्थ में डेटा एनालिसिस को जानना चाहते हैं, क्या दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है, क्या हम कोई और कोर्स या फिर कोई और कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। बट होता क्या है ना कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको वहां पे से जीरो से स्टार्ट करना है, और जीरो से स्टार्ट करने के बाद में होता क्या है कि वहां पे कंपटीशन देखो, वहां पे आपका जो नॉलेज है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा,
ओके, जो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो कभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, क्या आपको उतना फ्रूटफुल होगा? देयर कुड बी लेस चांस। उसका क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो आप आज जाके नेट पे सर्च करो कि डेटा एनालिटिक्स का या फिर डेटा साइंस या फिर किसी भी रिलेटेड डेटा के जॉब में क्या अप्रोच है, फिर कितना उसका स्कोप है। इट हैज अ ह्यूज स्कोप। स्पेसिफिकली बोलता हूँ 2019 के बाद में जो कोविड के एक जो हैम्परिंग हुई है पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद में आप देखोगे तो इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। लोगों को पता चला है कि विदाउट गोइंग ऑफिस ऑल्सो वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग। हमें जरूरी नहीं कि फिजिकली अपेयरेंस होना है हर जगह पे। हमें जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली एक जगह पे आपको आके वहां खड़ा ही रहना पड़ता है, फेस दिखाना ही पड़ता है। नॉट रिक्वायर्ड। आप विदाउट फेस या फिर विदाउट प्रेजेंस भी आप वहां पे चीजों को काम करने को आप एक्सेस कर सकते हो, बट यू जस्ट सिंपली नीड एन इंटरनेट। तो उसे हो गया, हुआ क्या है कि वर्क फ्रॉम होम, ओके, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, हाइब्रिड, ऐसे बहुत सारे नए नए मेथड्स निकल के आ गए हैं। सो उसी की वजह से आज आप देखोगे कि डेटा के बेसिस में देखोगे तो सिर्फ जॉब ही नहीं, आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, एजुकेशन सेक्टर ले लो, आप कस्टमर रिलेशनशिप ले लो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लो, आप जो डिपार्टमेंट या फिर जो डोमेन बोलोगे वहां हर जगह पे डेटा 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 हो चुका है। बिकॉज ऑफ द डेटा। अब आपको तो सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि एआई ने हमारा जॉब या फिर एआई हमारा जॉब लेने वाला है। ये एआई कैसे सीखा, कैसे आया, उसको कैसे पता चला, फिर वो कैसे ये अचीव कर पा रहा है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डेटा ओनली। जितना आप डेटा को समझ पाओगे, जितना आप डेटा पे वर्क कर पाओगे, आपका ग्रोथ उतना मल्टीप्लाई में बढ़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टअप कर, आज स्टार्ट कर रहे हो, आप सीख रहे हो डेटा को। आज आप क्या करो, जितना भी हो सकता है जस्ट फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली द डेटा मींस। यही डेटा का नॉलेज लेके आप आगे जाओगे, नेक्स्ट स्टेप आपका डेटा साइंस रहेगा। डेटा साइंस करोगे, डेटा साइंस के बाद में एआई होगा। ओके, सो इट इज नेवर एंडिंग जर्नी। ये आपको हर समय एक 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 स्टेप करके ऊपर ही लेके जाएगा। हो सकता है पैरेलली आप किसी बीआई सेक्टर में चले जाओ, हो सकता है कि शायद आप आगे जाके कोई और ब्रांचेस में जाओ, बट अल्टीमेटली आपको इसका ग्रोथ ही मिलेगा। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली वी आर वर्किंग ऑन डेटा एंड डेटा इज जनरेटेड एवरीवेयर। एवरीवेयर आप जहां बोलोगे वहां पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ना, पहले हम एक रिटेल सेक्टर में एग्जांपल के बेसिस में, तो पहले हम रिटेल सेक्टर में या फिर किराना दुकान में जब हम जाते थे तो क्या होता था कि वी यूज्ड टू टेक वन बैग एंड वी यूज्ड टू टेक लेट्स से अ लिस्ट व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय आवर पेरेंट एंड देन वी यूज्ड टू टेक दैट। हम जाते थे, काका ये है, अंकल देखो ये डिटेल्स हमको दे दो। क्या करते थे वो, हाँ भाई रामू, हाँ भाई छोटू, ये देखो ये अपने शर्मा चाचा, इनकी डिटेल्स दे दो। बंदा सब करके हमारे पास आ जाता था और हमारे बैग में दे देता था। नाउ ये चीज आज क्या हो गई है, चेंज हो गई है। क्यों चेंज क्यों करना पड़ा? इसका रीजन ये है, जो वहां पे एक शॉप था, वो शॉप क्या था, सिर्फ उतने ही लोकेलिटी के लिए रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, बिजनेस बढ़ रहा है, उनको भी एक्सपांड होना है। तो उन्होंने क्या सोचा कि व्हाई आई शुड लुक ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, आई शुड एक्सपांड माई सेल्फ। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास में जो डेटा था उस डेटा को उसने इंफॉर्मेटिव वे में सेग्रीगेट किया। क्या किया उन्होंने, कस्टमर सेगमेंटेशन किया। कस्टमर सेगमेंटेशन को ये पता चला कि अच्छा कौन से कस्टमर्स मेरे लॉयल है, कंटिन्यू आते रहते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, कौन से टाइम में चाहिए होता है, कितने क्वांटिटी में चाहिए होता है, सब उन्होंने मैनेजमेंट करना सीख लिया। इसी तरह हम भी क्या करने वाले हैं, हर एक कंपनी को, हर एक इंडिविजुअल के बेसिस में, हमारे क्लाइंट को, हमारे जितने भी रिक्वायर्ड यूजर्स हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, डेटा को सेग्रीगेट नॉलेज और उसमें से इंसाइट निकाल के देते हैं ताकि वो उनका डिसीजन ले सके। Okay, so that is our focus. And anyhow, if any person is there who is able to analyze the data and if he is capable to give a particular direction to any organization, he is always welcome. Okay, तो यही हमें फोकस रख के करना है। आप इस पेज पे देखोगे, एनीवेयर आप एग्रीकल्चर ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, जहां चाहिए बोलो वहां पे, हर जगह पे आज का डेटा, आज डेटा की वजह से सब जगह ऑनलाइन या फिर आज सब जगह पे डेटा एनालिटिक का वर्क चल रहा है। उससे तो बियॉन्ड है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। उससे बियॉन्ड क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, डेटा साइंस है, इट इज बियॉन्ड दैट। बट फर्स्ट होता है डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस का पार्ट। आप डेटा एनालिसिस अगर अच्छे से नहीं करोगे तो सीखने वाला डेटा गलत सीखेगा तो गलत ही जाएगा। डेटा अच्छा अगर प्रोसेस किया है तो अच्छा ही जाएगा। सो फर्स्ट स्टेज होता है, जो रॉ स्टेज होता है, वो अपना ही होता है, वो होता है डेटा एनालिटिक्स का। ओके, दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग हो गया। तो आप बोलोगे सर फिर आप डेटा साइंस क्यों नहीं सिखा रहे हो, आप एआई क्यों नहीं सिखा रहे हो? Hello, sir. या Hello. या बोलिए Your बोलिए। screen is not visible. मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है गाइस? No. No, sir. Screen is visible, sir. ओके, It is visible for me as well.
ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, जिनको इशू है ना, एक बार प्लीज क्या कीजिए, पर लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए एक बार। ओके, दैट माइट बी एन इंटरनेट इशू। ओके, सर ये मीटिंग आईडी और पासवर्ड क्या रहेगा इसका? दूसरे मोबाइल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इस पे बैटरी खत्म हो रही है। कुछ नहीं, आपको बस लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ से मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा ना। ओके गाइस, मेक श्योर कि ये आपका कनेक्ट करने के बाद है ना, माइक ऑफ रखे। ओके, नहीं तो क्या होगा, वो दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। ओके, मेक श्योर दैट। ओके फाइन। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आया है, लेट मी चेक व्हाट वाज दैट क्वेश्चन। इट्स विजिबल। ओके, थैंक यू फॉर द रिस्पांस, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। ओके, तो मैं कह रहा था कि हाँ, डेटा के बेसिस में, सो आप कहीं भी जाओ, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आज क्या है, डेटा। अब हर एक चीज पे क्या हो गया है, हर एक सिस्टम में क्या हो गया है, देखो अभी हर एक कंपनी, हर कोई क्या करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है। तो प्रीवियस डेटा जो भी था, उसके बेसिस में क्या फाइंड आउट करना चाहता है, वो पैटर्न फाइंड आउट करना चाहता है। पैटर्न। ओके, वो क्या जानना चाहता है, कुछ कोरिलेशंस। ओके, वो जानना चाहता है इनसाइट्स। तो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होते हैं ना, ये हम प्रोवाइड करते हैं। हम मतलब कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिटिक्स पर्सन। So this is a role which is responsible for giving a proper feedback, a rightful feedback, which will provide or which will lead any organization to a right path for the success. So ये हमारा रोल है। ओके, नाउ ये सब चीजें सीखने के लिए, फिर सब चीजों को जानने के लिए, बिकॉज विथ दिस एन नंबर ऑफ एंड 100 लेट्स से एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, वी आर गोइंग टू लर्न दिस डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स। अच्छा, ये स्किल्स मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, दीज आर नॉट स्किल्स बट व्हाट आई हैव मेंशन्ड एंड व्हाट आई हैव पॉइंटेड आउट ओवर हियर। नहीं, मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज बेस्ड ऑन दिस रेफरेंस, इंडीड ये भी एक ही रेफरेंस में एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे लिंक्डइन है, नौकरी है, बहुत सारे होंगे। बेस्ड ऑन दिस, जब कभी भी आप रेज्यूमे चेक करते हो, तो दीज आर द स्किल्स: डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, स्टैटिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सेल। अब क्या हम ये 100% कवर करने वाले हैं? नो, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, आई नो दैट। और कितने ड्यूरेशन में करने वाले हैं? विद इन 3 मंथ पॉसिबल है? नहीं, ये भी नहीं है। तो पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा स्किल्स हम सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट या फिर 100% नहीं कर सकते। इसी के लिए क्या किया है, देखो हमने पूरा का पूरा स्किल पे फोकस नहीं किया है। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन डेटा प्री प्रोसेसिंग, विच इज अ कोर फॉर डेटा एनालिटिकल रोल। डेटा प्री प्रोसेसिंग, अब ये है क्या भला, है ना, ये एक्चुअली है क्या, व्हाट दिस इज, डेटा प्री प्रोसेसिंग है क्या, इसमें होता क्या है? इसी में डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपको डेटा विजुअलाइजेशन का डिटेल्स पता चलता है, इसमें आपको स्टैटिक्स पता चलता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है पता चलता है। आप इसे एक्सेल में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो। आपको मैनेजमेंट, अब ये मैनेजमेंट में ये नहीं कर हर एक चीज में, बट डेटा मैनेजमेंट समझ में आ जाता है, डेटा क्लीनिंग समझ में आता है, डेटा एनालिटिक्स समझ में आता है, अटेंशन टू डिटेल क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। डोमेन नॉलेज बेसिकली हर एक डोमेन के हिसाब से होता है। ओके, वो आपको भी आ जाएगा। देन आर नहीं है, नो सीक्वल नहीं है, डेटा माइनिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। यस, इन सीक्वल वी आर गोइंग टू फोकस ऑन माई सीक्वल स्पेसिफिकली, सो ये भी आ जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, यस, बिग डेटा नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या नहीं किया हमने कवर। सी वी हैवंट कवर ओनली लेट्स से दिस वन, लेट्स से 100% में से हमने 80% यहाँ पे कवर कर रखा है। 80% ऑफ आवर स्किल्स आर बीन ओवर हियर विच इज मेंशन्ड, विच इज बीन कवर्ड ओवर हियर। नाउ ये चीजों को क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज यस, डेटा एनालिटिक्स के अबव मशीन लर्निंग का डिटेल्स होता है। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड डेटा एनालिटिक्स पार्ट एंड देन यू विल गो देयर। आर इज अ लैंग्वेज व्हिच इज अगेन लाइक पाइथन ओनली, ये भी कोडिंग होता है, स्टैटिस्टिकल के लिए होता है। नो सीक्वल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है, हमारा काम स्ट्रक्चर्ड डेटा में होता है। दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टिंग दैट, अदरवाइज दैट कुड आल्सो बीन देयर। तो ये टेक्निकल टर्म्स है, आपको आगे समझ में आ जाएगा, बट यस वी आर कवरिंग 80% ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर हियर दैट वी आर गोइंग टू फोकस टू कंप्लीट इन विद इन 3 मंथ्स। अब बोलेगे सर इज इट रियली पॉसिबल? हेलो, पाइथन सॉरी ही। सॉरी सर फॉर इंटरप्ट। बोलिए ना। आप कुछ तो बोल रहे थे, हम डेटा साइंस क्यों नहीं से कराए, एआई क्यों नहीं से कराए, वो बीच में ड्रॉप हो गया सर। या ओके, थैंक यू फॉर द रिमाइंडिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि डेटा एनालिटिक्स क्यों सिखा रहे हैं, क्यों डेटा साइंस में आपने नहीं कहा, क्यों मशीन लर्निंग से? उसका रीजन क्या है, आप डेटा एनालिटिक्स सीखने के बाद में ही आप डेटा साइंस, जिस डेटा साइंस में आप देखोगे तो मशीन लर्निंग एमएल ये ऐड होता है। अनटिल अनलेस आपका बेस डेटा एनालिटिक्स का अगर
लेट्स से साउंड प्रूफ कहो, या फिर अगर प्रॉपर नहीं होता है तब तक क्या होगा, इसमें गलती होगी, इसमें गलती होगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, एमएल मशीन लर्निंग जिसे कहते हैं, कि क्या और कौन सा एल्गोरिथम मुझे लगाना है मेरे डेटा में, until and unless you understand data. So data analytics is a role where it is a core step, or let's say the basic step which is compulsory to be known. ये जानोगे तो ही आप डेटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग होता क्या है, तभी कर पाओगे. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस फर्स्ट. हाँ, ये आपको एक बार पता चल गया ना, तो आपके हिसाब से आप कभी भी डेटा साइंस के लिए जंप कर सकते हो, मशीन लर्निंग के लिए भी जंप कर सकते हो, आप एआई के लिए भी आगे बढ़ सकते हो. बिकॉज अच्छा, कैसे पॉसिबल है? यस, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो. बिकॉज इन आवर पाइथन, स्पेसिफिकली इन पाइथन लैंग्वेज विच इज मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एआई के लिए ये लैंग्वेज को बहुत फोकस किया जाता है. ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, यहाँ पे सिखाया जाएगा. पाइथन सिखाने के लिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्या सर मैं वेब डेवलपर बन सकता हूँ? क्या सर मैं उसमें गेम डेवलप कर सकता हूँ? क्या सर मैं उसमें कोई सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ? नो, डोंट थिंक इन दैट वे. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट एंड वी आर नॉट इवन इन्वॉल्विंग इन दैट. हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिसिस. आप पाइथन में डेटा को बैठ के एनालिसिस कर लोगे, मैं आपको इतना तो अच्छा बना दूंगा. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, कि पाइथन में जब आप वर्क करोगे तो सिर्फ एनालिसिस करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि हम बस छोटे छोटे काम करेंगे, नहीं. आपको डेटा सेट दिया जाना है, प्रोजेक्ट करना है, उसमें आप लाइब्रेरीज को कॉल आउट करते हो. दोज लाइब्रेरीज आर यूज्ड इन डेटा साइंस, दोज आर यूज्ड इन मशीन एल्गोरिथम, दोज आर आल्सो यूज्ड इन एआईस. सो यस, ऑब्वियसली यू विल गेट फेमिलियर विद दिस. इसीलिए कहा जाता है कि डेटा एनालिटिक्स अगर आप पार्ट करोगे तो दिस विल बी अगेन अ ब्रेकिंग थ्रू फॉर यू इन फ्यूचर. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay. So so here data visualization, yes, आप एक्सेल में करो, पाइथन में करो, पावर बीआई में करो, yes, we'll do that. मशीन एल्गोरिथम यहाँ पे नहीं है because this is next for. हाँ I बोलिए. want to know about that. These demanded skills all will be teaching in our sessions. यस, देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन से देखो. एक्सेल, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको मेंशन किया है, एक्सेल, पाइथन, माई सीक्वल एंड पावर बीआई. दिस आर द 4 टूल्स दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन. ओके, ये 4 टूल पे हम काम करने वाले हैं. इसके बेसिस में हम क्या करने वाले हैं, विद रेफरेंस टू दिस टूल वी आर गोइंग टू वर्क विद डेटा प्री प्रोसेसिंग. ओके, डेटा प्री प्रोसेसिंग. अभी डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है? आपको एक रॉ डेटा, कभी भी रॉ डेटा टेबल ऐसे दिया जाता है, उस टेबल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे एनोमलीज होते हैं, बहुत सारे इश्यू होते हैं. अगर आप इस डेटा को, जो डेटा क्लीन नहीं है, उस डेटा को यूज करके आप एनालिसिस करोगे तो आपको हमेशा क्या है, आपका एक्यूरेसी, अगेन मैं नहीं कहूंगा कि रॉन्ग आंसर इंटरप्रेट होगा, हो सकता है कि एक्यूरेसी जहां पे हमको 80% एक्यूरेसी चाहिए, वहां पे क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉप होकर 50% आ जाएगा. अब मैं यहाँ पे इसको रॉन्ग नहीं कह रहा हूं. क्यों मैं 50% पे बोल रहा हूं? आपको एक एग्जांपल देता हूं. बिकॉज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. लेट्स से कि अगर आपको ये बताना है कि सामने वाला बंदा, ओके, लेट्स से द पर्सन, लेट्स से हु इज एडमिटेड इन योर हॉस्पिटल, इन योर कैंसर हॉस्पिटल, आपको ये बताना है कि ये बंदे को कैंसर है कि नहीं. ओके, तो आप क्या करते हो, एन नंबर ऑफ टेस्ट लेते हो उसे, है ना, जितने सारे सब टेस्ट लोगे. अगर आपका डेटा प्री प्रोसेस नहीं है, गलत है, गलत नहीं कहूँ, जैसे कि उतना प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है, तो क्या होगा, आपका एक्यूरेसी भी गलत आएगा. और अगर आपका एक्यूरेसी 50% का एक्यूरेसी है, ओके, तो आपने जो इतना nth टेस्ट के लिए, इतने सारे नंबर ऑफ टेस्ट कराने के लिए जो उसको कहा पेशेंट को, जो उसने पे किया, तो 50% एक्यूरेसी है. तो अगर आपने कहा यस, तो चांसेस आर नो. आपने कहा नो, तो चांसेस आर यस. तो ये जो नो यस यूनिवर्स का खेल है, भैया अगर 50% चांसेस था तो उसने हेड या टेल ही कर दिया होता घर में बैठ के, इजंट इट? इफ दैट हैज बीन, क्योंकि हेड टेल का भी देखोगे रेशियो तो 50% है. सो अगेन, इट्स नॉट रॉन्ग, बट इट इज वेरी लो. So if your data is good, if your data pre-processing, if your data that you are referring is good, then you have high accuracy for further analysis. So let's say for insights. क्यों? Ultimately आपके भरोसे पे सामने वाले ने डिसीजन लेना है. So for that, data pre-processing plays a huge role. Okay. Am I clear with this, guys? Hi, Yes, sir. sir. हाँ बोलिए. Yes, yes. Yes, sir. Sir, I have a doubt. बोलिए.
Sir, actually, I'm a bit confused between what should I go for. I have technical background, but not no background. I have done my engineering in electrical. Mhm. Now I'm shifting in IT, so I have Mhm. no as such knowledge of any IT background. So I'm confused between data science and data analyst. Sir, so there was a glitch in my side of internet. Sir, can you please elaborate and tell me what should I go for? I have zero knowledge in IT, as in anything. Sure, sure, sure. See, the thing is Yeah, that I'm thank you. also, yeah, I'm also one of the person who has been passed out in 2013 in automobile domain. So I was also not having any, let's say, knowledge about codings. Okay, the problem, तो उसमें मैंने क्या किया फिर I first started with data analytics because directly over data science, it's a huge deal. It's really very huge deal. Why? Because anyhow आप कहीं से भी जाओगे बीआई करना है डेटा एनालिटिक्स आपको सीखना पड़ेगा आपको डेटा साइंस बनना है डेटा एनालिटिक्स सीखना पड़ेगा आपको मशीन लर्निंग सीखना है डेटा एनालिटिक्स व्हाई बिकॉज डेटा एनालिटिक्स इज अ बेस डेटा के आपको आगे क्या करना है यू हैव टू प्ले विद डेटा यू हैव टू इम्प्लाई सम नॉलेज until unless you have knowledge with respect to data pre-processing or data analysis you cannot go further. So the first step is always data analytics part, this data analysis part. Now, if you have a knowledge, or let's say if you have that knowledge that it is required for your, let's say data science job, or let's say data science step, you can obviously go for that. But if you do not have any knowledge, or let's say if you are just beginning, okay, you are just entering for this particular field, I will obviously mention that, or I will recommend that you go for data analytical sessions, or let's say courses, or this particular details, because this is a core. If you are having a good knowledge over here, it will always be easy for anyone to go for data science or AI. Okay. Yes, sir. Now ऐसा क्यों होता है, या फिर मैं ऐसा क्यों उसको इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू सी एक्सेल आपको आता होगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ओके, आपको पावर बीआई भी, क्योंकि एक्सेल आता है तो पावर बीआई भी बहुत कुछ फेमिलियर होता है, नो इशू विद दैट। लेकिन दो चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम करती है, दो चीजें कौन सी है, एक होता है पाइथन और एक होता है सीक्वल। हो सकता है बहुत सारे लोगों को सीक्वल भी आ जाए, हो सकता है उनको पावर भी आए नहीं। आप नॉर्मली क्या होता है, तो जब आपको बहुत सारी चीजों को सीखना है, चार में से दो चीजें हो सकता है शायद आपको आए, दो ना आए, तो ये जो दो चीजें आपको कभी भी दिखेगी ना, ये दो चीजों को सीखने के लिए टाइम लगता है, एंड सीखने के बाद में आपको परफेक्ट करना होता है। परफेक्ट नहीं कहूंगा, जैसे परफेक्ट इज नथिंग इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट, बट आपको उसमें क्या है, एक्सपीरियंस लेना होता है। यू नीड टू बी एन एक्सपीरियंस पर्सन, ओके, ताकि आपको कोई क्वेरी आती है तो सॉल्व करना आना चाहिए, आपको कुछ अगर इशू आता है तो यू शुड बी एबल टू रिजॉल्व दैट बाय योरसेल्फ। ये सब चीजों को होने के लिए क्या है, टाइम लगता है। Now, if you are looking for get placed instantly after completing, it is very good you go for data analytics part. But you have patience. If you think कि नहीं मुझे आराम से करना है, अभी कोई मेरा urgent नहीं है, I'm looking for, let's say, for future planning or that, then you can directly go for data science also. Is it clear? So skipping directly to the data science part is okay. It's just that I will have to work hard and I'll have to do things a lot of on my from my side. Mm-hmm. Yeah, that's also one point. But again, as I said, data science only we have to directly data science के algorithm, because see, in data science what happens, we actually work on MLs. But again, if you don't have any idea about data analytics, you cannot work on ML direct level. So obviously they will take you around let's say 2 to 3 months for this only, and then they will pursue with this. So, sir, I should first complete the data analyst course, get some experience, and then go for data science. You are recommending Exactly, this to me. exactly, exactly. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Yeah. Okay. Any other questions from our participants? Others, please, you can have that. Sir, Yeah, please, बोलिए. sir, basically, how much duration it takes to complete overall? Okay, see, you will take around 3 months. Okay, 3 months. अच्छा, ऐसे क्यों 3 month? See, for Excel पकड़ लो 15 days, for SQL पकड़ लो 15 days, for Python पकड़ लो 15 days, Power BI यहाँ पे लिखा नहीं है, विजुअलाइजेशन ले लेता हूँ मैं, let's say 15 days. तो ऐसे करते करते देखो कितना हो गया, 15, ये 2 महीना हो गया. ओके, नाउ 2 महीने के बाद में अगेन एग्जैक्टली 2 महीने तो नहीं है, छुट्टी वुट्टी जो भी आते रहेंगे, तो अराउंड इट टेक्स 2 to 5 months. 2.5 महीने के Okay, बाद में या फिर 3 महीने के अराउंडिंग में आपको प्रोजेक्ट्स भी देने होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स भी वर्क करना है, isn't it? और प्रोजेक्ट के साथ में मॉक भी करना है, तो ऐसे सब करते करते अराउंड इट गोज फॉर 3 months लाइक दैट. ओके. okay, sir. You told for Excel 15 days and Python 15 days.
Sir, within 15 days, Python it will be covered, sir. Yeah, it will be covered. Again, why and how? Let me tell you that One more also. question, sir. Python will be you will be teaching from ground zero, or which is the main part there, which we want to use in majorly, which is used in Yeah, data analytics, that we yeah, let will me only. let me explain that also. See why I'm saying 15 days. And don't take it as exactly 15 days. It may go up to 20, but No, 3 to 5 15, days around 20, that. exactly. Yeah, yeah. Okay. I got it. So within that days, what we are going to do? Okay, let me break it down. So it's a, for example, if scratch, as we have said from scratch, up scratch se basic kya hai now, why we are capable of doing this? The thing is that even if we are starting from the scratch, we are not focusing on web development or games or something, isn't it? Software development, we are not focusing on that. That's why what happens, there are n number of applications and there are n number of methods you can work with Pythons, but we are focusing on only and only data pre-processing part. So whatever steps or whatever methods are used in data pre-processing, that will be taught over here in the scratch. Obviously we are not going to look for oops. ओके उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट. ऐसे ही ओके रेगेक्स की जरूरत नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है. देन ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जो आपको उतना जरूरत नहीं पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, तो हम वो क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं. दैट्स व्हाई वी विल बी एबल टू वर्क विद दिस. ओके Okay, sir. One more question, sir. Basically, I have प्लीज. completed my engineering in 2024. ओके So till now it's 1.5 year experience. ओके Then after 1.5 years, now I'm learning this data analytics, sir. ओके How much I have to be prepared myself that I could survive in any of the company with 1.5 years of experience. okay what exactly you want to be, let's say how much preparation means, what preparation you are Yeah, asking about? yeah, No, what preparation you are asking? yeah. No, I'm asking that in which perspective you're asking, what preparation you're asking. In What terms of preparation? Python, yeah, in terms of Python, Excel, in terms of data Overall, sir. analytics, or in Overall, which sir. term? Overall data, total data analytics. Overall, I Okay, I should survive in company after clearing interviews. Sorry to interrupt you, sir. I will give the answer in the last of the time. Okay, in the after finishing sir presentation. Okay, I will give this answer. Okay, so sir, you continue with that. I will give that answer. Okay. thank you. Yeah, अभी okay, कितने मतलब कितने दिन का कोर्स रहेगा सर, कितने महीने का? yeah, we will have 30 days. Oh, sorry, 3 months, not 30 days. 3 months course. Okay, max what I'm saying, 3 months का कोर्स रहेगा, जिसमें कि 15 15 20 20 ऐसे करके डेज होंगे, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा. सेशंस, थियोरेटिकल पार्ट्स एंड फाइल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, डेटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा. अगेन मेरे साइड से जो भी नोट्स होंगे वो प्रोवाइड करूंगा, बट इट इज फॉर श्योर आपको आपके खुद के रनिंग नोट्स बनाने होंगे. ओके, डोंट रिलाई ऑन कि मैं आऊंगा और मैं आपको नोट्स दूंगा. ओके, डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज जितना आप खुद के हिसाब से रीड करके बनाओगे इट विल बी वेरी मच फेयर फॉर यू ऑल्सो. ओके, सो ये डिटेल्स है. अगेन इस 3 मंथ के बाद में आपको दिया जाएगा प्रोजेक्ट्स. ओके, प्रोजेक्ट्स, and project will have, let's say, 10 days of estimation. Within 10 days you have to submit that project. How many projects? There will be 3 projects, 2 to 3 projects for each and every person. It might be based on group or it might be based on individual, but there will be 3 projects. And then you will also have to go through with 3 mock. Why 3 mock? First, second and third, they are level L1, L2 and L3. Okay, L1 will be basic, L2 will be, let's say, in intermediate, and L3 will be based on scenario. If you are able to pass all of this, I'm sure that you will be getting a good job, because this is the hardest part. Okay. Hello, sir. Yeah. Actually, I want to know one more thing. Actually, I already learned like Excel and SQL and Power BI. So can I learn fast on the basis of recorded classes? And after that, after 1 month only, can I attend the mock interview for the final interviews? Okay, Amresh. Okay, just for confirmation. Okay, don't take in otherwise. Do you know RLS? Yeah.
R RLS? RLS. No, sir. Yeah. Okay. Do you know how to, let's say, do a direct query or import query? Difference of them? No. Okay, anyhow, okay. Now see, those are the questions related to Power BI. So I'm not, let's say, saying that you're not knowing that, but I'm just confirming that. So yes, obviously you might be knowing something, but there are lots of more things that you need to learn over here, isn't it? So what I'm suggesting is that obviously what you are knowing, please share us with us also, but let us give you some more information. Okay, so please cooperate with it. And yes, it is good that you are thinking that again, I already have the knowledge, so it's better for me to join directly over the session. It is good. But again, until unless you clear all the mocks, I will not be able to, let's say, go forward with resume and further. Okay, so that is the ultimatum that I would be providing. So can I give a mock interview as soon as possible after like seeing all your LMS and recording classes and a small Yes, yes. whatever After like 3 months, you can go. No issue. no, I'm talking about I don't have time for 3 months because I already completed a data analytic course from the some else like company Yeah, that's why I asked training you, no, institute. RLS about. So that's why I asked you about RLS, but you were not able to answer that. This is one of a product, or let's say one of a answer which is in Power BI, one of a role that has to be implemented, है ना? तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपको पता नहीं है. I'm saying that there are lots of other things that you need to focus on still. Okay, so please focus on those, and then when you will complete it again, you are saying that you will go for directly mock. Okay, so what I can say is that. Not directly, sir. I will just go through myself your learning platform and I'll check all the like whatever overview whatever your Okay. your Python, Excel, and whatever Okay. overviews are there that I will go Sir, through that for sorry to fastest interrupt way. you. What we will do, we will after this presentation, we will discuss about this topic. Now, sir is going to tell everything about that. No, the please. So what I'm saying, whatever your question like that, you can ask to me. Okay, sir is right now what syllabus they are describing. Listen the syllabus, whatever your placement questions, whatever your questions like that, I will give the answer. Okay, so now continue that. Okay, we will give the answer. I will give the answer. Okay. Yeah. Okay, thank Okay, you. okay, sure. Yeah. Okay. Now here are the big, let's say, players over here. These are our four major players that will be playing around us. So MS Excel, Python, SQL, and Power BI. Now, why we are creating, or let's say why we are mentioned over here in this such a way. Now understand that when we talk about these two tools, okay, when we talk about these two tools and this file formatting, you must have seen that in anywhere you will see that these are the major player where you will find a data set, or let's say the type of format which is being present in data. These are the two giants, Excel and MySQL. With reference to that, here you will able to understand that at date when we are doing data pre-processing part, there are very, let's say, essential points that it has to be resolved in at source level only. Source level means when you are fetching data is fetched based on different sources, which is one of Excel and which is one of MySQL. If you are asked, if anybody asks you to do the data pre-processing part in source level over there only, so you should be able to do that. That's we are focusing over here. And after that, let's say if there is scenario where you are not able to do there, customer is asking that to do over your system, or let's say your let's say or other tools. So for that we have Python, where you can start from scratch, from zero to everything you have, zero to max. You can do everything from importing data to data pre-processing and visualization in Python. But it has some limitations. Again, as I said, Python has some limitations. When we talk about visualization, you can visualize the data in 2D, 3D, and many views. But the problem is that the interactive thing, or let's say interactive options that is present in Python has a limited option, which over here Power BI comes in a picture. Power BI not only is easy for anyone, it is very, let's say, intuitive visuals, which provides you more and more depth. Okay, so Power BI is very much good for your visualization process. So here we will cover everything from start, from source to data pre-processing part, and then visualization for its decision. Okay, so this is how it is. You can see data collection, then
language data pre-processing with this, and then visualize. So here is the path that we are going to follow for that. Again, what exactly data pre-processing is, as we were discussing earlier, data pre-processing involves cleaning, transformation, data to make suitable for analysis. See, wherever you find the data is always in a raw format. वहां से कुछ information extract नहीं हो रहा होता है. It is very bunch of a bulk of information होता है जो column basis में, record basis में हो जाता है. उसमें से data extract करना है तो yes, we have to be very accurate with that. Consistency होना चाहिए. ओके, डेटा सेट में. तो ये सब चीजों को आप एक ही तरीके से यूज रिजॉल्व कर सकते हैं, वो है डेटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट. इसमें कौन से स्टेजेस होते हैं? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डेप्थ, बट हियर इन्वेंट्री डेटा होता है. ओके, डेटा सोर्स जहां से आप लेते हो, उसमें क्या होता है, फिक्स इशू करना पड़ता है हमें. फिर उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है. अगर आपके पास में 100 कॉलम्स है, क्या आप 100 के 100 कॉलम पे वर्कआउट करेगा? नॉट रिक्वायर्ड. गिने चुने कॉलम पे भी वर्कआउट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि 10 कॉलम्स ही नेसेसरी है, तो इस 10 कॉलम को, जो नेसेसरी कॉलम, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? दैट इज आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फीचर्स. फीचर्स या फिर रेफरेंस टू कॉलम. देन अप्लाइंग इंजीनियरिंग लाइब्रेरीज, क्या करना चाहिए उसमें, क्या मेथड हमें करना है, अगर कुछ इशू है तो क्या करना चाहिए, स्केलिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब चीजें भी सिखाया जाता है. देन वैलिडेट योर रिजल्ट, चेक करो जो आंसर चाहिए था, जो लग रहा था, जो आपका सस्पिशियस थिंग है, जो आपको लगता है, जो आपको चाहिए, क्या वो फॉलो हो रहा है? वैलिडेट इट. वंस वी हैव डन विद ऑल दिस, अगर सब ठीक ठाक है तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करो, अदरवाइज फिर से रिपीट करो. सो ऑल दिस स्टेजेस आर देयर दैट वी नीड टू गो ऑन एंड ऑन अगेन. साइकिल है, ये चलता रहता है. ओके, ये चीज सिखाई जाती है. ना मार्केट में आप जाओगे तो आपको तीन चीजों को हमेशा पूछा जाएगा, फिर आपके दिमाग में, फिर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे से, या फिर किसी भी एक आपके एक्सपीरियंस बंदे से पूछा होगा, या फिर आपने कभी सुना होगा यूट्यूब पे कहीं पे, तो ये चीजें बहुत सुनी होंगी. डेटा मंजिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा माइनिंग, ये टर्म्स, these are very technical terms which are normally used in our data pre-processing part. लेकिन ये तीनों की तीनों different है. Those are not same. Okay, it is very important that one should know. So ये है क्या? So whenever you are hearing about data munging, let's say for example ये फाइल है. ये फाइल क्या है? Let's say ये available है JSON फॉर्मेट में. JSON फॉर्मेट में अवेलेबल है. Let's say ये XML फॉर्मेट में है. डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल है. आपको किस में चाहिए ये फॉर्मेट? आपको चाहिए टेबुलर फॉर्मेट में. तो आपको क्या करना पड़ेगा? Converting this format into your required format, CSV format, let's say, इसको कहेंगे हम data munging. That means the process of cleaning and transforming raw data into useful format for analysis is called data munging. ये warehouses में बहुत यूज होता है. warehouses मतलब क्या होता है? एक आपका फॉर्मेट आपने रेडी कर दिया होता है. डेटा कहीं से भी आए, किसी भी फॉर्मेट में आए, लेकिन एक बार मेरे सिस्टम में एंट्री करने के बाद में आउटपुट में आपको हमेशा एक स्ट्रक्चर डेटा जो मुझे चाहिए उस हिसाब से फॉर्मेट में मिलता है. सो वेयरहाउस उसके लिए काम किया जाता है. अगेन, वंस द डेटा इज देयर, क्या करते हैं हम उसमें से? क्या करते हैं हम? वी रिमूव एरर्स, वी रिमूव इनकंसिस्टेंसी. ओके, दैट इज फॉर डेटा क्लीनिंग. यस शिव, प्लीज गो अहेड. Actually, sir, my question is what is the data warehouse, sir? ओके, डेटा वेयरहाउस क्या होता है? फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आपको एनालिसिस करने के लिए डेटा चाहिए सामने वाले को. ओके, लेट्स से कि एक टूल है. अब इस टूल में क्या है? आपको ना सिर्फ CSV फाइल ही चाहिए इस टूल में, लेकिन आने वाला फाइल क्या है? जितने भी डिटेल्स आते हैं वो क्या है? अलग अलग फॉर्मेट. ये PDF में हो सकता है, ये लेट्स से XML में हो सकता है. ओके, ये हो सकता है इमेज में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में. अब ये जो आपका डेटा वेयरहाउस क्या करता है? जितने भी सोर्सेज से फाइल आ रहे हैं, आपको जो रिक्वायर्ड एक फॉर्मेट जो आपने बना रखा है, जिस CSV में आपको चाहिए, नॉट ओनली CSV फॉर्मेट, बट कौन सा कॉलम में क्या होना चाहिए, कौन से रो में क्या डिटेल्स होनी चाहिए, दोस आर ऑल फॉर्मेटेड. ये चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है यहाँ पे उन चीजों के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है, और उसको क्या करता है? आपको आपके टूल में एंटर करने के लिए जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो आपको रेडी करके देता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. In short, unstructured data is converted into structured data as we desire. I would not say unstructured, but yes, every data, let's say whatever data is available, it could be unstructured, it could be semi-structured, it could be structured as well also. Okay. So data munging and data cleaning में क्या है? Removing errors, inconsistency को निकालना. Okay, ये सब चीजें data cleaning में होता है. जब ये दोनों काम हो जाते हैं, उसके बाद में आपका काम आता है, या फिर उसके बाद कह सकते हैं कि फिर से हमारा जो काम रहता है वो है डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग मतलब क्या है? फाइंडिंग आउट पैटर्न्स, फाइंडिंग आउट कोरिलेशंस, फाइंडिंग आउट इनसाइट्स बेस्ड ऑन विजुअल्स, बेस्ड ऑन ग्राफ्स, बेस्ड ऑन चार्ट्स, ताकि आप आपके क्लाइंट को, यूजर्स को समझा सको कि हमने क्या किया है, जो प्रॉब्लम में कैसे हुआ था, उसका रिजोल्यूशन क्या है.
that it comes with that. So when you combine all three of this, then it is called data pre-processing. Is it clear? Yes, sir. Fine. Now, based on, let's say आपने सब कुछ सीख लिया, आपको सब पता चल गया और आपने सबका वर्कआउट कर लिया है, तो आपके पास में कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जो हमें आगे मिलेंगे सीखने के बाद में. सो हियर आई हैव ब्रेक डाउन इनटू मेजर डिटेल्स विच इज डीए, डेटा एनालिटिक्स और बीआई. यस, एज एन अगर आप कंप्लीट कर देते हो डीए का, तो आपको बीआई के लिए भी अप्लाई करने में कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज बीआई हमारा पावर बीआई हमने ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट किया है, विच इज यू कैन डू दैट. और डीए तो है, चलो आप कर ही लोगे. ओके, सो डीए में देखोगे अगेन इट्स वेरी वेरी लेट्स से सरफेस इंफॉर्मेशन जो मुझे ऊपर के ऊपर मिल चुका था इंस्टेंटली ढूंढते हुए, तो ये मैं चीजें बता रहा हूँ. आप डेप्थ में जाओगे तो और इसका और ब्रेक डाउन करके रोल्स में मिल जाएगा. मार्केटिंग एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, ऐसे एन नंबर ऑफ एनालिस्ट रोल्स मिल जाएंगे. बीआई में देखोगे तो बिजनेस कंसल्टेंट है, डेवलपर है, बीआई मैनेजर, ये सब विजुअलाइजेशन के इसमें. ओके, टेम्पलेट्स बनाने की चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपको रोल्स मिल जाएंगे. सो देयर आर एन नंबर ऑफ डोर्स विच विल बी ओपन फॉर यू. Okay, so these are some opportunities, these are some roles that have been mentioned over here. And obviously company तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, you already know. These are some of the companies that are mentioned. Even Google है, बहुत सारे बड़े बड़े companies जो लेते हैं. Okay, so I'm not saying कि आप सब Google में जाओगे, फिर सब आप Microsoft में जाओगे. हो सकता है आप में से कोई लोग जरूर जाए, but again हमारा अप्रोच होना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट हमें मिले. Okay, for that. Okay. Now with the conclusion of this is your contact details, email ID on all over here. And thank you for everyone for being so much patience. And if there is any query, yes, please put on and I'll provide you the answer. Yeah, hi sir. Yeah, This is one second, Mustafa just 1 second. Okay, let me reframe you with this. I am here for technical help for project, for sessions, and for durations I'll be providing. But for placement issue, okay, there will be other team which is placement. They are very much let's say experienced in that. They'll be helping you with that. Okay? Hello, sir. So Hello. yeah, बोलिए. Hello. Hello. Yes, sir. I'm Siddharth Orange. Yeah, बोलिए. सर मैं ना इमेज बाय का स्टडी कर रहा था, कंप्लीट किया ही. सर मेरा सिर्फ पाइथन रह गया है सर. मैं पाइथन करके डेटा एनालिस्ट में स्विच कर सकता हूँ क्या? पाइथन करके डेटा एनालिस्ट में हाँ कर सकते हैं ना. अगर आपका पूरा हो चुका है, कॉन्फिडेंट, तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं. सर मेरा एसक्यूएल, पावर बीआई, ऐसे सारे एसएसआईएस ये सब हो गया है. ओके ओके. तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल होनी चाहिए? नहीं, आपके पास ऑलरेडी है. आपके पास ऐसा जरूरी नहीं कि पाइथन आना ही चाहिए. यू ऑलरेडी हैव दैट ऑप्शंस, बट पाइथन विल गिव यू एन अपर हैंड. आपको एक ऑप्शन जरूर देता है, एडवांटेजेस पार्ट देता है. तो इट्स बेटर कि आप वो भी कंप्लीट कर लो और यस यू विल बी देयर. सर पाइथन में बेसिक कांसेप्ट भी क्लियर चाहिए ना, डीप में नहीं चाहिए ना? नहीं, बेसिक नहीं कहूंगा मैं. सी बेसिक मतलब क्या है कि देखो, आपको फंक्शन बनाना आता है क्या, लेकिन बनाने के बाद में क्या वो कहाँ पे अप्लाई करोगे, है ना, वो भी तो चाहिए ना नॉलेज. तो इंटरमीडिएट तक होना चाहिए. मेरा क्या मतलब है कि ओप्स कांसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए क्या? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड. ओके. Excuse me, sir. बोलिए ना. I wanted to know how many days we'll be having the class and for how many hours. Yeah, I'll write it down. सर जो प्रोजेक्ट होंगे वो इंडस्ट्री बेस्ड होंगे या फिर आप अपने साइड से दोगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस? नहीं, इंडस्ट्रियल बेस में रहेंगे. ओके Sir, so project live will be project, right? Hello. हाँ बोलिए. Sir, I have one more doubt. As I said, I am from non-technical background. तो आप from scratch सिखाएंगे हमें, because I don't know anything about it. Yes, In 15 scratch से days, सिखाना. in 15 days, you will teach us from scratch to the desired target. Yes. Okay, sir. Thank you. Same, Yeah. just because I also don't have any experience about. I'm also non-IT person, so Yeah. we will start from zero. Yes. Sir, We'll be starting projects from will be zero. We'll real be- time projects, sir. Yeah, we'll be starting from zero up to the end. But again, it is only focused on data pre-processing. ये ध्यान रख के ही करना. Okay. Will be complete, no issue. Sir. हाँ, अभी जो प्रोजेक्ट के बारे में है, रियल प्रोजेक्ट, yes, there are real projects now. रियल प्रोजेक्ट मतलब क्या? I didn't get it because there are lots of things Real over time there. projects, But मैं sir. आपको Sir, हाँ मैं what clear will बताता हूँ. be? Yeah, I'll update. Let me update that. It's not real. I would say it's a trend, or let's say which is required in a market, which has been, let's say,
analysis which is required for any organization to do that. Yeah. So I'll focus on that. That will be presented, because live project, the company who is working on the project, he will not ever or never be involving anyone in that directly. Never. Okay. Yes. But the project which is in trend, which is required to be done, that will be surely provided. Sir, one more question, sir. Sir, after completion as a fresher, what salary we can expect, and experience of 1.5 years, what salary we can accept? Okay. Average 7 lakh package हो ही जाता है. Okay, annually की बात कर रहा हूँ मैं. 7 lakh As a packages. fresher? Yes, as a fresher नहीं, as an experience बोल रहा हूँ मैं. Fresher it could be let's say 3 to 4 lakh. Again depends on. ऐसे नहीं कि freshers को मिलता नहीं है 7 lakh. They also do that. But again, that skills and that has to be that knowledge has to be shown from your side. Okay, sir. One more question. Hello. Classes will be daily or weeklies? Okay. See, classes will be from Monday to Friday, weekdays. Okay. It will be around Okay, 1.5 hour, which is, let's say, for example, 9. Basically, it will be always 9 to 10:30 p.m. Okay, evening. Yeah, p.m. evening. So only one batch is available? For Okay, now. okay, sir. What Hi, DA? sir, this is Mustafa from Power BI batch. Hello. Yeah, buddy. Hi, sir. Only one batch is available, sir. Yeah, for now we have only one batch. 9 to 9:30, that is. Yeah, 9 to 10:30. 10:30. Sorry, 10:30. Yeah. Okay. Hello, sir. I'm audible. बोलिए. Yeah, Hello. this is Mustafa. Hello. हेलो हाँ, बोलिए. सर मेरा नाम है सर. मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आप जैसे हम अभी डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिसिस का कोर्स जैसे कर रहे हैं, मतलब लेकिन आजकल कई कंपनियां जो है ये एआई के रेस्पेक्टिव में डेटा एनालिसिस का क्या रोल और कितना सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा वो मेरे को समझाएंगे सर. क्योंकि एआई के आने के बाद में कई एप्लीकेशन ऐप्स हैं जो डायरेक्ट डेटा प्रोसेसिंग करती है, मतलब रिजल्ट देती है. हाँ, श्योरिटी नहीं है, जैसे आपने बोला था कि 40-50% प्रोबेबिलिटी है कि वो गुड होगा, प्रोबेबिलिटी होगा बेकार होगा. ओके, सी अगर आप फिक्स्ड ऑपरेशन बोले या फिर अगर फिक्स्ड प्रोसेस पे काम कर रहे हैं. फिक्स मतलब क्या होता है? एक ही स्टेप बार बार, लेट्स से रेगुलर प्रोसेस आपका जो है वो कंटिन्यूस सेम है. तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ना आपको सेम रूटीन में काम करना होता है, तो वहां पे एआई जरूर आएगा. आज नहीं तो कल जरूर आएगा. इवन मैं ये भी बताता हूँ, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में भी एआई आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं कि हम सिक्योर्ड है, हमारी जिंदगी हो गई बस हम तो फिट हो गए. नॉट लाइक दैट. इट विल बी देयर आल्सो, बट अभी उसको आने के लिए बहुत टाइम है. उसका रीजन क्या है ना, सी व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो लगता है ना, वो अभी भी एआई में आया नहीं है. इट्स स्टिल ऑन वर्किंग. दैट्स व्हाई वी आर सेफ टिल नाउ. ओके, हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन में 20 साल बाद, 10 साल बाद वो भी आ जाए, बट फॉर नाउ इट इज वेरी फार अवे. ओके. Hi, sir. This is Mustafa from Power BI batch. So I have one more question. We'll be starting the classes from like this Monday, coming Monday, or when? No, 1, 2, 3, 4. I think 4th is the. Let me confirm this once again. I just want to know 5th. that there is 5th would be any. there. 5th. Hello. From 5th we'll be starting the classes, right? Yeah. Okay, and we will be starting at 9 to 10:30 p.m. right? Yes. We have only one batch. Yeah. So I don't have any further questions. I will be joining the class as you said. And so can I drop the call or do you want me to stay on the call? Yeah. Please, you can confirm with the placement also. Thank you. Sir, one Yes, more thank doubt. you, sir. Hello. सर जो एक जो हमको Hello. बताया था, जॉब प्रोफाइल्स बताई थी सर हाँ. अभी लास्ट में. हाँ. तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि मतलब कौन सी प्रोफाइल किस हिसाब से हमको मतलब बेटर रहेगा चूज करने में? जॉब प्रोफाइल देखो, आपका डेटा एनालिटिक्स का प्रोफाइल है. ओके, और दूसरा है जो बीआई का प्रोफाइल है. बीआई अगर आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है, आपको डेटा को सिर्फ एनालाइज करना है. ओके, उसमें डेटा क्लीनिंग नहीं करना है. डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, मतलब डेटा जैसा दिया है उसी के बेसिस में मुझे वर्कआउट करना है, वो कैसा भी हो. ओके, तो आपका आता है बीआई रोल में. अगर आपको उसको क्लीन करना है, क्लीन मतलब क्या होता है? एनोमलीज को हटा के उसको अच्छा करना है ताकि मेरा प्रोसेस भी अच्छा हो, तो आपको डेटा एनालिटिक्स के रोल में जाना पड़ेगा या फिर जाने का इंटरेस्ट होगा. तो ऑब्वियसली बीआई का रोल थोड़ा इजियर होता है डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से. ओके, दैट इज आल्सो ग्रेट. इसलिए आपको पता चलेगा कि मार्केट में देखो डेटा एनालिटिक्स का सैलरी थोड़ा ज्यादा है एज अ बीआई कंपैरेटिव में. ओके, तो अगर आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है,
उसी के रिलेशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ग्राफ के साथ में खेलना ज्यादा पसंद है, चीजों को विजुअल पर्सपेक्टिव में देखना है, तो गो फॉर बीआई। ओके ओके, तो सर हमको मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमको डेटा एनालिस्ट सीख के फिर आगे बीआई में भी एक ही बंदे को करना पड़ता है, ऐसा प्रोसेस नहीं है क्या? वही तो बोल, देखो आपका अगर इंटरेस्ट बीआई में है ना, तो डेटा एनालिटिक्स सीखने के बाद में आपके पास डोर ये भी तो ओपन है ना बीआई का, वो जी बंद थोड़ी हो जाता है। जी सर मैं ओके, मतलब मेरा 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है डिजाइन फील्ड में, ये हम्म, सीजीआई एंड मूवी एंड वीएफएक्स में। ओके, तो मतलब मेरा मुझे थोड़ा बहुत तो मतलब ये टेक्निकल फील्ड भी है मेरी साथ में, तो मेरा जो जॉब प्रोफाइल है प्रॉपर आर्टिस्ट वाला नहीं है। तो अब मैं भी इसमें स्विच कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी थोड़ा वैसा है, तो दोनों इज बेटर। मेरे लिए क्या रहेगा कुछ जिसमें मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अगर लग जाए तो, या फिर मतलब जो अरे मुझे हेल्प क्या करे बात कर वैसे। रहे हो आप, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में देखो भला, आप जाके एआई जो एनीमे में देखो, इतने क्या बात कर रहे हो, सीजीआई हो क्या पैसे बात कर रहे हो, एनीमे में देखो आज का मार्केट देख, पता है ना आपको कितना हो गया है जी जी एनीमे का। जी फिर आपसे कौन एक्सपेक्ट, मतलब आपसे कौन ज्यादा जानता होगा। सो इट हैज अ जी ह्यूज बूम, जी बहुत बड़ा है। और जी अगर उसी नॉलेज को आप कंटिन्यू करके चलोगे डेटा एनालिटिक्स फील्ड में, तो इट विल गिव अ ह्यूज इम्पैक्ट। जी ओके थैंक यू वेरी मच। या इसमें अभी कितने राउंड मिलेंगे सर, मतलब इंटरव्यू होंगे हमारे, मतलब जब तक यस, लगेगा तब तक होगा, या क्या एक या दो ही इंटरव्यू मिलेंगे बाद में हमको? ओके, यू विल हैव 3 मॉक्स इंटरव्यूज। तो देखो इंटरव्यू जैसे होता है ना, अगर आपका 3 मॉक ही कंप्लीट हो जाता है ना, इंटरव्यूज अराउंड आपको एक वीक में 2 या 3 आ जाता है। उसके लिए भी फिर से प्लेसमेंट टीम है, वो आपको जरूर अपडेट करेगी। बट लेट मी कंक्लूड विद टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल क्लियरेंस अगर ये होता है तो फिर मैं उनके पास करता हूँ आपका क्वेश्चन। ओके, एनीवन हु हैज Okay. एनी टेक्निकल कंसर्न्स, Yeah. प्लीज यू कैन प्लीज पुट Yes, डाउन, sir. अदरवाइज Mr. The हाँ बोलिए। classes will be Sir, online or only offline? ऑनलाइन, No offline batches are available. right now we don't have Pers- any offline, but if there will Personal be any in training. future, we'll update. Okay, sir. Yeah. Hi, Thank you. sir. This is Mustafa. Sir, I'm from classes Power will BI be batch. only online, or we will get recorded session also, sir? Yes, you will get recordings. Okay. Live as well as recording sessions. Yes. Yeah. Okay, Hi, sir. thank you, sir. Hi, sir. This is Mustafa from Power BI batch, sir. हाँ I बोलिए just बोलिए। wanted your guidance. Like, I am actually very good at Power BI and SQL Server. Okay. And should I expand my knowledge in data analytics, or should I go with like Azure tools like Data Factory, Synapse, or analysis services? I just wanted your guidance on that. इसके लिए तो आपका स्किल चेक करना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ इफ डायरेक्टली तो से नहीं कह सकता ना। सो ट्राई टू जी, कांटेक्ट तो मी इन पर्सन इफ पॉसिबल, है ना। yeah, actually I have क्या yeah, okay, sir. क्या And one more thing, sir. Hello. Sir, बोलिए Yeah, बोलिए। one more thing, sir. Sir, actually, I have given like 2 months in like Power BI and SQL Server. I actually can't give like 3 months more. So can I please like do Excel and Python? Then I can go with mock ओके, interview. उसके लिए Is देखो that okay? देखो फॉर दैट उसके लिए आप क्या करो, आपके जो पीओसी है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन, उससे एक बार कांटेक्ट करो, एंड देन वी विल हैव डिस्कस, है ना। ये थोड़ा सा ऑफसेट हो जाएगा। ओके, Yeah, okay. या ओके। Thank you. अदर टेक्निकल टर्म्स या क्वेश्चंस प्लीज। Hello, sir. या बोलिए। Sorry, I have doubt about the आपका experience. आवाज ब्रेक हो रहा I है। have career में रहेगा question. या बोलिए। I have experience of 1.5 year in Monte. So I'm applying the job of data analytics on the previous experience. No, we are not able to hear you properly. It's always breaking in between. Sir, Hello. one more question, sir. Yeah, बोलिए। Sir, Yes, after sir. Actually, there completion is of a data analyst and business intelligence, right? Right. So both are same or different? Different. So if I have to complete the data analyst, then business intelligence I have to again need to join. No. You'll be getting in D only. Data analytics में सब cover हो जाएगा। Okay. See, data analytics के साथ में आप BI कर सकते हो, okay? But BI के साथ में आप data analytics नहीं कर सकते। It's not vice versa. Okay, it is only one way. Data analytics through BI, not BI through DI. Okay. Okay. So what is the duration of DA? DA 3 months. And BA, BI? BI same. ये 3 months उसी में included है ना। Okay. All आप right. data analytics, if you complete data analytics, you will also have opportunity for BI. That's what I'm saying. All right. Thank you. Yeah. sir, one more question. बिजनेस एनालिस्ट के लिए अगर जाना चाहते हैं तो डेटा एनालिस्ट के थ्रू जा सकते हैं?
जा सकते हैं, but it would be difficult because business analytics has a different responsibilities as compared to DA and BI. It has a different responsibility. The person should know also the process, है ना, जो industry में चाहिए फिर जो particular domain में चाहिए, he also has to know that processes, which is not covered in this. Okay. Can you hear me right now? But if you want to do analysis, yeah, there you are. You can go through that. Can you hear me? Yeah, बोलिए. I have a question about that. I have 1.5 year of experience in Nordic field. So after completion of the course, so can I apply that experience for the data analytics? Okay, that will be handled by placement team. मैं उनको जरूर बताऊंगा. क्या technical clear हो चुके हैं क्या? Should I pass on, please? Tell me. No technical, sir. I mean, there is no any technical terms that I have worked in a previous job. So that's why actually I have discussed with one of the advisors of the Arbor. So he told me that your experience will be carried forward in a data analytics. So no Okay, worries then, about that. okay, so then don't worry. अगर उन्होंने just बताया है asked- तो we will try to get say involved with that. No issue with that. We'll try to get that. Okay. And sir, sorry to interrupt you, sir. I think that technical questions are finished, Yes, and yes. all remaining questions are only for placements. Yes, I think yes. that I will handle this all questions. Sure, sure, sure. That would be